Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is basic definitions, and the first definitions that we are going to discuss about the matter. And you all know that very well. We already have discussed this chapter in the previous lecture. The definition is matter. Matter is simply defined as anything that has mass and occupies space is called a matter. And you know very well about the states of matter. There are three basic states of matter: solid, liquid, and gas. And you know there is another one, fourth state, that is called plasma, that we are not going to discuss in this ninth class chemistry. One thing more I want to tell you, जो पीछे डेफिनेशंस रह गई हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, वो अभी विल डिस्कस लेटर इंशाल्लाह, हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं डैट आई वांट टू क्लियर. सो आवर टॉपिक टुडे बेसिकली इज़ द सब्सटेंस एंड मिक्सचर. तो सबसे पहले हमने आज ये पढ़ना है कि सब्सटेंस क्या होते हैं, व्हाट आर द सब्सटेंस and what is the mixture. In simple words, we say that a piece of matter in pure form is termed as a substance. कोई भी चीज़ अगर वो अपनी खालिस हालत में है, प्योर स्टेट में है, तो हम उसको बोलेंगे सब्सटेंस. क्या बोलेंगे? सब्सटेंस. लेट टेक द एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस just like this. These are some examples of substance. You can see chemical elements. Substance जो हैं वो may be elements, substance may be compounds, substance may be crystals. The question is that how they looks. Just like an elements, sulfur, diamond, tin, these are elements and they are pure form. And pure form means के इनमें कोई भी दूसरी चीज़ ऐड नहीं हुई, ये खालिस हैं, ये मिक्सचर नहीं है. सेकेंड इज़ अ कंपाउंड, जस्ट लाइक शुगर. शुगर इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड. वाटर इज़ अ कंपाउंड. बेकिंग सोडा इज़ अ कंपाउंड. एंड दे आर इन अ प्योर स्टेट. दैट्स वाई दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड सब्सटेंसेस. सिमिलरली वी हैव अदर एग्जांपल्स, salt, proteins, crystal, copper sulfate crystals. So these are all the examples of pure substance. Actually we have a different categories of matter. Matter may be a pure substance, may be a mixture, and pure substance may be an element, a compound. I told you already in the previous picture, पिछली मेरी पिक्चर में आपने देखा. ठीक है, अब आप इनके पार्टिकल्स के साइज़ को देख सकते हैं. क्या एलिमेंट जो होता है दैट इज़ अ सिंगल एटम. यू कैन सी हेयर दीज आर जस्ट वन बॉल एंड सेम टाइप ऑफ बॉल. So these are the elements, but the compounds are made by different elements. Just like water is made by hydrogen element and oxygen element. There are two hydrogen elements and one oxygen element. So these particles have two different colors. Two colors are same, that are red, and one color is different. It means this gray color is oxygen atom and the red colors are hydrogen atom. Here is example of mixture. Mixture may be a homogeneous mixture and heterogeneous mixture. We will discuss later. So what is the mixture? You know, when you mix two or more things together, just like you put a sugar in the water, and here you know that water is a compound, it means it is a pure substance, and sugar is a pure substance. And when you mix these two pure substance, when you mix these two pure substance, you will get a mixture. You will get a mixture. Okay? And you can take another example. When you put a spoon of any flavor, just like jamishiri, in the water, it become a mixture. So mixture is made by mixing up of two or more things. So this is the main difference between the mixture and the pure substance.
Pure substance is pure, it is not impure. Impure means it is not mixed. No one is, we cannot mix anything in the pure substance, but we can make a mixture with these substances. So this is an example to understand the, let's take more examples to understand the pure substance. Just like a water is a pure substance, and oxygen you inhale by cylinders is a pure oxygen. But the oxygen in the air is not a pure, because air has many other gases, just like oxygen, nitrogen, carbon dioxide. So when you inhale air, oxygen gas move in your body with nitrogen gas and carbon dioxide gas, but nitrogen gas and carbon dioxide not used by our body, but oxygen is used in our body. Salt is a pure substance. So these are the examples of substance. Let's take a look of the book where are these definitions. So the first definition is the, a piece of matter in pure form is termed as substance. This definition you have to write in your books. Second definition is the, this, impure matter is called a mixture which can be homogeneous or heterogeneous in its composition. We will discuss what do you mean by homogeneous and heterogeneous later in the other lectures. So these are two definitions that you have write in your notebooks clearly with the, by using markers. Now take another examples of basic definitions. There are other basic definitions which are called the physical properties and the chemical properties. I have to choose a, sorry for this interruption. Let's take another downloads and chemical change, physical change, properties. Here is a picture. Now, what are the properties? You know, everything has some basic properties, just like a matter has a properties. Everything in our surrounding is a matter. You have a chair on which you are sitting, it has some properties. The properties may be physical properties and chemical properties. Now you will ask questions, sir, how a chair has both of properties. Physical properties means, what is the color of chair? Color of chair. What is the length of chair? Length of chair. What is the volume of chair? Opacity of chair. Taste of wood, because it is made by wood. So it means we will try to find the properties of the wood. What are the properties of the wood? What is the state of wood? Wood exists in solid state. What is the color of wood? Color of wood is just like a brown. What is the taste of wood? The taste of wood is tasteless. What is a odor? Means smell. मतलब खुशबू. खुशबू क्या होगी लकड़ी की? It has a wooden smell. So these are the physical properties. So what will be the chemical properties? The chemical properties of wood, how it is made. मतलब कि इसकी एक्चुअली ये किससे बना है? इट इज़ मेड बाय कार्बन एलिमेंट. ये सारा का सारा जो वुड है, इट इज़ मेड बाय कार्बन एलिमेंट्स. अच्छा, व्हेन वी बर्न वुड, व्हाट विल हैपन? जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा? आग पैदा होगी. आग पैदा होगी, हीट पैदा होगी, गैसेस बनेंगी. दीज आर ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज़. अच्छा, अब आप लोहे को जलाएंगे क्या आग पैदा होगी? नहीं. लोहे की प्रॉपर्टी आयरन की प्रॉपर्टी नहीं है. आयरन को आग नहीं लगेगी, लेकिन जो वुड है उसकी प्रॉपर्टीज़ को आग लगेगी. इसी तरह टॉक्सिसिटी, अगर आप वुड को खा लेंगे तो क्या होगा? अगर उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर तेज़ाब गिर जाएगा तो क्या होगा? तो ये सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? वुड की हैं. इसी तरह पानी, बेस्ट एग्जाम्पल. तो पानी की दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पानी की क्या है? उसका कलर क्या है? कलरलेस है. व्हाट इज़ द आउडर? मीन्स स्मेल क्या है? स्मेल उसकी कोई भी नहीं है, इट इज़ आउडरलेस. व्हाट इज़ द टेस्ट? उसका टेस्ट भी कोई नहीं, टेस्टलेस. कलरलेस, आउडरलेस, टेस्टलेस.
ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर. नाउ लेट टेक अ लुक ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, व्हाट विल हैपन व्हेन यू बॉयल अ वाटर? It boils, it goes into the vapor states. What will happen when you drink a water? जब आप पानी पियोगे तो क्या होगा? पानी mix up your body and goes to your blood and do some function. These are the chemical properties. अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आप एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिक्स करते हैं. Why? To check the chemical properties. How we check the chemical properties? When we add 2 or more chemicals, then we will get the chemical properties of the chemical. So just like water is a chemical, what will happen when you mix a acid? What will happen when you put a sodium metal in the water? Sodium metal is a metal in the chemistry. जब आप सोडियम मेटल को पानी में फेंकते हो तो वहाँ आग लग जाती है, ठीक है. कैन वाटर बी बर्न? क्या पानी को जलाया जा सकता है? नो, पानी कांट बी बर्न. इट्स अब लकड़ी को आग लगती है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द वुड, बट वाटर कैन नॉट बी बर्न. पानी को आग नहीं लगती, पानी को फायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द water and it is a chemical property of the water. So toxicity of the water, what are the minerals present in the water? So these are all the physical and chemical properties of the water. Let's take a look of the book. So you have to write just definition of the physical property. Physical property, the properties those are associated with the physical state of the substance are called physical property, like color, smell, taste, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल्स. सो आपने ये डेफिनेशन जो है वो शेप ऑफ क्रिस्टल तक सिर्फ याद करनी है, ठीक है. दिस इज़ योर टुडे लेक्चर. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस, मिक्सचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स.